6 long years they stayed unseen, then boom, we found a hole in between. A tale of missing crores, plummeting stock, and an audit party nobody wants to be invited to. Should you as depositor or as investor be worried? कैसे लगेगा आपको और उसका impact क्या हुआ? Bank's net worth took a 2.3% hit. A banker once smiled, so happy, so bright, till numbers went missing in broad daylight. 6 long years they stayed unseen, then boom, we found a hole in between. Welcome folks. Today we deep dive into the IndusInd Bank fiasco. A tale of missing crores, plummeting stock, and an audit party nobody wants to be invited to. What exactly happened? Is IndusInd Bank in real trouble? Should you as depositor or as investor be worried? Let's break it down with facts, finance, a bit of fun. Now what actually happened here? Let's talk of the missing mystery, the shocker. उनको 1600 crores का discrepancy दिखा in its forex derivative transactions. Imagine if your bank suddenly found कि 1600 crore had been misplaced in a transaction done 6 years ago. Sounds absurd, right? Basically, some numbers didn't add up and it took them 6 whole years to notice derivatives में इतना discrepancy था. Just imagine checking your bank account and realizing a few lakhs of rupees has been vanished. कैसे लगेगा आपको और उसका impact क्या हुआ? Bank's net worth took a 2.3% hit. 2.3% hit हुआ बैंक की नेट वर्थ के ऊपर. स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, full panic mode. Stock dropped 27% in one single day. Closed at 656 rupees on the day the news came out. Imagine waking up, checking your portfolio and realizing you are 25% poorer overnight. It was the worst single day fall since the Yes Bank crisis for any banking stock because उसने 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज किया. And then Moody's, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, it placed it under review for a potential downgrade. Yes, that's like a teacher telling you, beta, let's talk about your grades. The moot question, was this a fraud? The bank insists it was a reporting error. I repeat, the bank insists it was a reporting error. But investors aren't that convinced. So होता क्या है? RBI आता है. Because जब numbers disappear होते हैं, regulators start watching it or start scrutinizing it. So RBI has launched a forensic audit into checking the IndusInd Bank books of accounts. I mean, think of it as a teacher who's rechecking your exam paper because your perfect 100 numbers look suspicious. So what's being checked? Did IndusInd Bank deliberately fudge the numbers? What bad loans disguised as good ones? Is this another Yes Bank sort of a situation which happened in 2020? Meanwhile, IndusInd CEO Mr. Sumant Katpalia, he didn't get the usual 3-year career appointment. RBI ने उनको सिर्फ 1 ईयर का अपॉइंटमेंट दिया है. It's like let's see how you behave before we decide your next salary hike. अब ये तो हुआ बैंक के साथ. हम बात करते हैं आपकी और मेरी कि क्या आपका पैसा सेफ है? For customers, your deposits are safe. The bank isn't collapsing overnight because बैंक का लास्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था 1400 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर का, और ये जो नुकसान है वो 1600 करोड़ का है. सो करीब एक क्वार्टर का जो प्रॉफिट्स है वो इसमें नुकसान में निकला है, अब जो पुष्लिन बैंक ने एक क्वार्टर में अर्न किया था. फॉर इन्वेस्टर्स इट्स वोलेटिलिटी अहेड. द स्टॉक विल ओनली रिकवर, आई रिपीट, ओनली रिकवर इफ IndusInd convinces regulators and investors that this was just an error. And for everyone out here, this case is a lesson on corporate governance, that banks must be transparent and accountable. और अगर समझें कि is this a scam or a sloppy accounting, the jury is still out. But one thing is clear, the banking sector is under scanner like never before. And the moral of the story is, in banking, numbers don't lie. But if they hide, investors will cry. RBI will dig, Moody's will rate, and stockholders pray it's not too late. अब सोच के देखो यार कि अगर आपके बैंक को 6 साल लगे to realize that your money was missing, would you still trust them with your savings? I mean, अगर एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि चलो एक अकाउंटिंग एरर था, राइट, तो बैंक को अगर तो एक्नॉलेज करता ना सीधा सीधा कि यार हमसे मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई, हम उसको मानते हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन इट और ये शायद आगे से नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं पर और कॉन्फिडेंस होता. लेकिन बैंक तो सीधा निकाल रहा है कि चलो ठीक है यार एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम हो गया है, कहीं ना कहीं पर एज इन्वेस्टर आई एम नॉट कंफर्टेबल, राइट. तो मैं इवन इफ द प्राइसेस फॉलो डाउन एंड इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, आई विल रादर स्टे आउट. आई एम नॉट कंफर्टेबल. जबकि अगर आप देखो, मिस्टेक काफी सबसे होती है, एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स, ओके है, लेकिन एक चीज होती है उस चीज को समझना और उसको एक्नॉलेज करना. यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नहीं है. तो एक बार के लिए तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि चलो यार 25% स्टॉक डाउन है, एक अच्छा बाय बनता है. लेकिन कहीं ना कहीं पर me personally as Himanshu Jain, I'm not comfortable in putting my money into a company like this, क्योंकि
या तो आप अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो कि यार हमसे मिस्टेक हो गई है। कहीं ना कहीं पर जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया उसमें कहीं ना कहीं पर एक पर्दाफाश है कि यार कि हो रहा है, देख लेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर तो सीधा मैनेजमेंट एकदम से ऑनेस्टली आकर इस चीज को एक्नॉलेज करता, क्योंकि मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, राइट, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, लेकिन आप या तो एक्नॉलेज करो सही से, और अगर आप एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहे हो, मैं पर्सनली एज हिमांशु आई एम नॉट कंफर्टेबल इनटू पुटिंग माय मनी इनटू अ स्टॉक लाइक दिस जब तक कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बाहर नहीं आ जाए। तो rather स्टे अवे। मैं बाहर से इसका सॉर्ट ऑफ तमाशा देखूंगा, लेकिन मैं अपना पैसा इसमें नहीं लगाने वाला हूं। हैविंग सेड दैट, फॉर एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट दैट द बैंक इज गोइंग टू फॉल डाउन और आपके क्रेडिट्स में कुछ नुकसान होने वाला है। जैसे मैंने बोला कि 1400 करोड़ से नेट प्रॉफिट था, 1600 करोड़ का अकाउंटिंग नुकसान हुआ है, तो मैक्सिमम जो नुकसान है बैंक के लिए एक क्वार्टर का है, ठीक है। तो फ्रॉम अ सेविंग्स पर्सपेक्टिव इनटू बैंक, दैट इज स्टिल नॉट अ वरी। वरी इज द प्रोएक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट टू कम आउट क्लीन, अनक्लीन और ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। मेरे लिए कहीं ना कहीं पर वो थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी है, इसलिए मैं इससे थोड़ा सा दूर रहूंगा। आई मीन देयर आर मेनी अदर स्टॉक्स that we can look into, right? And what do you think? Was this just an error or something more fishy? Drop in your thoughts in the comment section below. And if in case you found this video insightful, hit like, share, and subscribe for more financial insights from the Wall Street School.